So hello everyone, and a very good afternoon to all of you, and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about Nobel Prize in Economics that was announced yesterday. First, second thing, yesterday we had done a class on Nobel Prize in Chemistry, Literature, and Peace. So थोड़ा सा छूट गया था उसमें. Last में I was supposed to discuss about the uh, Nobel Peace Prize का history भी discuss करना था. That also we will discuss in today's class. Okay. In yesterday's class, we skipped those portion, like the portion where I was supposed to discuss about the history of Nobel Peace Prize. Okay, so in the second half of this class, we will discuss that. And yes, we will discuss why Donald Trump was not given the award. वो भी हम लोग discuss करेंगे. ठीक है. Okay, so am I audible, visible? Is everything fine? Yes, good afternoon. कार्तिक चंद्रलेखा, am I audible? आवाज आ रही है? Is everything fine? If yes, then please write yes. Yes, sir, you're audible. Okay, fine. So let us begin with the first question. Nobel Peace Prize is given by which country? And this is the easiest question of the day. Norway, Sweden, Finland, Denmark. Yes, good afternoon, salutation. Good. The right answer is option B. Sweden is the right answer. Yes, B is the right answer. Kushagra, Kartikeya, Chandrlekha, you all right. So we have already done that. Only Nobel Peace Prize is given by Norway. The other 5 is given by Sweden. And here is its capital, Stockholm. Okay. Yes, this is Baltic Sea. This is what we call it as Gulf of Bothniana. The next is, what is the other name of Nobel Prize in Economics? Yes, Severidges Riksbank. Yes, Krishi Sachdeva. And why it is it's named after? Severidges Riksbank is actually the central bank of Sweden. So like we have central bank. Yes, very good. Severidges Riksbank Prize. It is the central bank of Sweden, founded in 1668. So if you add 300 years, it becomes 1968, and the Nobel Prize in Economics was established on this day. What's oldest surviving central bank? O3. It's a good question. This can be asked in the exam. जैसे ALET में there were questions that were asked. मैं बताता हूँ. जैसे एक पूछा था RTI we have taken from which country? And there's one more question. Ombudsman, जो लोकपाल होता है, the concept of लोकपाल or ombudsman we have taken from which country? What is the answer? What is the answer to this question? This is the ALET previous. Both from Sweden. Very good, Kartik. ठीक है, तो दोनों स्वीडन से ही लिया गया है. ठीक है. Yes. The RTI, right to information का concept, और लोकपाल concept है ना. लोकपाल या ombudsman like लोक आयुक्त in states. The idea behind this has been taken from Sweden, so you should know it. ठीक है, सब basic question जैसे ये पूछ सकते हैं. What's oldest surviving? One of the oldest surviving central bank में से Severidges Riksbank. ठीक है. So that is what you should be knowing. Name the institute which gives Nobel Prize in Economics. The right answer is option B, Royal Swedish Academy of Sciences. B is the right answer to this question. So award जो Severidges Riksbank नहीं देता है. ठीक है. So the right answer is B, not D. ठीक है. So Royal Swedish Academy of Sciences gives Nobel Prize in Physics, Chemistry, and Economic Sciences. This we had done it earlier. Also. So you have to be careful about this. So B is the right answer. Yes. Now let's talk about Nobel Prize in Economics 2025 this year. So as a question, the winner of Nobel Prize in Economics 2024-25 are what? बताइए. The right answer is
Yes, now this time I'm expecting you to give a right answer. Yes, Joel Mokier, Philip Aguillon, and Peter Howitt. I don't know the pronunciation. Maybe I might be wrong in the pronunciation of their names, but just remember it. Okay, so B is the right answer to this question. Nobel Prize in Economics, 3 people. Okay. Now let's talk about the first one. Joel Mokier won Nobel Prize in Economics for what? Anyone? Yes, Kartike, Kushagra, Adrija, Krishi, Sasdeva, Chandalekha, you all right. For having identified the prerequisites for sustained growth through technological process. ये है main keyword. ये याद रखना. ठीक है. Yes, Kartik, right. हाँ. So A is the right answer to this question. देखो actually award कैसे दिया गया है? Half इनको दिया गया है और इन दोनों को मिला के half दिया गया. That is how it is. ठीक है. So B is the right answer to this question. So Joel Mokier has been given for this purpose. Option A. Technological process keyword याद रखना, इससे आप आंसर कर लोगे, है ना? And let's move on to the other two. Philip Aguillon and Peter Howitt won Nobel Prize in Economics for what? For what? इसमें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है कीवर्ड है, ये याद रखना. फॉर द थ्योरी सस्टेन ग्रोथ ऑफ सस्टेन ग्रोथ, देखो सस्टेन ग्रोथ यहां भी है, सस्टेन ग्रोथ यहां भी है, ठीक है. तो वो नहीं इंपॉर्टेंट है. इसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज द कीवर्ड एंड हेयर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज द कीवर्ड. ये ऐसे पहचानना. हाँ, ठीक है. डी इज द राइट आंसर. वेरी गुड. मेनी पीपल आंसरिंग इट. गुड. कार्तिकेय, चंद्रलेखा, द्रिजा, हर्षवर्धन, कुशाग्रा, यू आर राइट. हाँ, ठीक है. सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तब देखते हैं. देखो ये जॉन मेकर सब इनको हाफ मिला. देखो लिखा ना 1/2, यानी 50% अवार्ड इनको मिला और इन दोनों को मिला के 50% अवार्ड मिला. सो इसका मतलब इनको 25%, इनको 25%, है ना. अब देखो इसमें लिखा है ना प्राइस शेयर 1/4. ठीक है. सो दिस इज हाउ दे हैव गॉट द अवार्ड. इनके लिए, इन दोनों के लिए वर्ड याद रखना क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. ठीक है, ये कीवर्ड है. और इनके लिए याद रखना टेक्नोलॉजिकल क्या है? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. इनके लिए नाम याद रखना है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. सो कीवर्ड. ओके, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर इट. फाइन. नाउ सो आप देख सकते हो जॉन मेकर फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्रीरिक्विजिट्स फॉर सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड द अदर टू फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. Why don't they award only one person? Krishi Sasdeva, that is their choice. 1 को भी दे सकता, मैक्सिमम अप टू 3 को दे सकता, ये चॉइस होता. तो समटाइम्स जैसे लिटरेचर या पीस में एक को ही जनरली दिया जाता है, जनरली, है ना. जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें मल्टीपल लोगों को देते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. देयर इज नो रीजन, ऑफ कोर्स दे कैन गिव टू वन पर्सन. जोएल मोकेर इज फ्रॉम व्हिच यूनिवर्सिटी करंटली? Maximum 3 people can be given award in one category. ठीक है. Is currently from? Yes, Kartik Kushagra, you both are right. Northwestern University, है ना. तो वो इजरायली, अमेरिकन और डच सिटीजन तीनों है. डच मतलब वही हॉलैंड के लोग कहते हैं, नेदरलैंड, है ना. अमेरिकन, इजरायली, इकोनॉमिक हिस्टोरियन, नोबेल प्राइज विनर, है ना. नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, तो वो तेल अवीव यूनिवर्सिटी वगैरह भी रहे हुए. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. He is born into a Dutch Jew family, so he's from and who had survived Holocaust. What is Holocaust? कोई बता? Yes, कार्तिक, you are right. हाँ, मल्टीपल पीपल को इसलिए भी देते हैं कि 2-3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज किया जाए, है ना. Means the genocide against Jews that happened actually during World War II, especially by Hitler. So that is why. So his family actually survived that. So he was born into a family of Dutch Jews, means Jews living in Netherlands. That's called as Dutch Jews, है ना. Okay, that is what you should know. And थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो. ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन, है ना. बाकी याली यूनिवर्सिटी वगैरह भी रह चुके थे पहले, है ना.
So yeah, he was an acting instructor there as well. Now the next person, Philippe Aghion, is from which university? Northwestern, Yale, Cornell, NSID. What is the right answer? Please answer me. Welcome to the class CLAT aspirant. Please answer my question. Yes, Karthik, you're right. The right answer is NSID. D is the right answer. Collège de France and NSID, पेरिस फ्रांस है ना, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस यूके, इसमें से कोई भी आंसर था तो आंसर है डी. सो फ्रेंच इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज विनर है ना, एट इंस्टेड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एट पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पास्ट का भी, but just have an idea about that. CLAT aspirant, please watch the whatever you have missed, actually recorded video, you should watch it. ठीक है, थोड़ा सा मिस हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको. Peter Howitt, the third winner of Nobel Prize in Physics, is from Brown University. Very good. Karthik, Kushagra, Malik, Kiyosara, you are right. चंद्रलेखा, हाँ, बी इज द राइट आंसर. तो इन तीनों का आप देख लो, है ना. जॉन मैकेर इज नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएस. फिलिप एगियन, कॉलेज डे फ्रांस इंस्टीड, है ना. पीटर होविट, ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएसए. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ठीक है, सो इनको जो मिला, फर्स्ट वाले को मिला है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से रिलेटेड है. इन दोनों को जो मिला है वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड. दोनों सस्टेन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के थ्रू, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के थ्रू. ठीक है, पीटर होवेट के बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा. ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएस, है ना, ये कनाडा में बॉन्ड हुए और एजुकेशन वगैरह मोस्टली यूएस वगैरह में हुई. ओके, हाँ, यहाँ देख सकते हो. सो दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, इससे और अच्छे समझ में आएगा. दिस इज वन विनर, सो ही गॉट हाफ अवार्ड फॉर सस्टेन ग्रोथ ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. The other half they too got, है ना. देखो ये एनसीड फ्रांस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, ब्राउन यूनिवर्सिटी से है, थ्रू सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. सो की वर्ड्स याद होने चाहिए, है ना, है ना. और इन दोनों को का जो मेन टॉपिक है वो ये था, है ना. और अभी एक्सप्लेन इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, यू कैन से. वैसे ये नीचे वाला दोनों याद रखोगे, दैट इज मोर देन इनफ. तब देखो ये लोग ना एक्सप्लेन करना चाह रहे थे पहले इनकी बात, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. ठीक है, तो इसको लोगों ने एक्सप्लेन किया है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने, कि पहले ये था, फिर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हुई, है ना, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, फिर ऐसे आ गए हम लोग स्मार्टफोन पर. ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअली. आप लोगों ने शायद ये वाला फोन नहीं देखा होगा, बट आस्क योर पेरेंट्स. आई हैव सीन दिस फोन. ये वाला तो रियल लाइफ में शायद नहीं देखा होगा, पता नहीं, बट नाउ डेज वी आर हैविंग दिस. ठीक है, फिर अगेन ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात हो रही है, इनोवेटिव बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना. हेवी प्लस विंड मिल, तो कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया अपना, इतना डिटेल नहीं जाना, आई डोंट थिंक सो दे लास्ट. हाँ, बाकी दोनों का है रेस्ट टू एक्चुअली क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. ठीक है, इन लोगों ने अपना कुछ कैलकुलेशन वगैरह दिया था, बहुत डेंजरस सा फॉर्मूला लग रहा है. ठीक है, तो पढ़ना नहीं है, बस एक ऊपर से ओवरव्यू देख लेना, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, मॉडल ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इन लोगों का पेपर है. ओके, है ना. तो इसका लोगों ने एग्जांपल ऐसे दिखाया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का. फर्म्स इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फर्म्स इन्वेस्ट करती है ना, और कंप्यूटर एग्जिस्ट बिजनेस लीडर्स, तो उससे क्या होता है कि उनका मार्केट लीडर बनते हैं, अर्न करते हैं प्रॉफिट, अपना एक्सप्लेन करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. इन दोनों को मिला इसके लिए, है ना. दोनों ग्रोथ की बात कर रहे थे, सस्टेन ग्रोथ की. बस ये टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन से बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से, और ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे. बोथ वे टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल ग्रोथ ओनली और सस्टेन ग्रोथ. ठीक है, नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट लास्ट ईयर आल्सो, बिकॉज वी हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट. पुराना क्वेश्चन वो पूछते हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कराऊंगा. विनर ऑफ नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स 2024, प्लीज टेल मी. Fast. Then we will discuss about the past of Nobel Peace Prize also, because that is also important. The right answer is option D, है ना.
डेरोन एसिमोग्लू, सीमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, इन दोनों को, तीनों को मिला था. क्यों मिला था? व्हाई दे गॉट लास्ट ईयर? डी वाज द राइट आंसर. व्हाट वाज सो स्पेशल? हाँ, क्लॉडियो गॉर्डन को 2023 में मिला था, राइट. हाँ. So the right answer is option B. For studies of how institutions are formed and affect prosperity. Institutions जो है वो prosperity को कैसे affect करते हैं? Yes, B is the right answer. हर्षवर्धन, चंद्रलेखा, कार्तिकेय, all right है ना. ये तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी से? The right answer is option A. All of them are from USA. कार्तिकेय, मलिक, क्योशारा, प्रियांशी, चंद्रलेखा, हर्षवर्धन, वाला राइट है ना. है ना. तो ये तीनों यूएस से हैं. ये जो थे, ये फर्स्ट वाले जो है वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे, दारेन एसिमोग्लू, है ना, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा. और जो सीमन जॉनसन थे वो कहाँ से? ये मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट से, अगेन ये भी है. एंड द थर्ड वन जो है जेम्स रॉबिन्सन, ये जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से. जस्ट हैव एन आइडिया, इतना डिटेल नहीं जाना है, बट आई हैव गिवन एन आइडिया बिकॉज इफ यू सी द क्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दे आर एक्चुअली गोइंग इन द पास्ट. पता नहीं क्यों पास्ट से सवाल पूछते हैं. सो ये लास्ट ईयर के 2024 विनर्स आप देख सकते हो. MIT से, ये भी MIT से, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. तीनों को इक्वल मिला था, 1/3 1/3 1/3. This we are talking about is last year 2024. ठीक है. Now important historical events associated with Nobel Prize in Economics. तो अब हम लोग हिस्ट्री में इसके जाएंगे. So let's talk about it. And I believe you all should be answering because ये सब अब आसान है. First given तो establish हुआ था 68 में and given in 69. है ना. 68 में क्यों? Because 1668 को Severidges Riksbank was there. So 300 years add कर लोगे तो हो जाएगा. So B is the right answer. सर अगर क्लैट में नोबेल प्राइज नहीं आया तो दुख होगा? नहीं, कोई बात नहीं, दुख नहीं होगा. हो सकता है किसी और एग्जाम में हेल्पफुल हो जाए. बट यस, प्रिपरेशन जब करनी होती है तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव करना होता है ना. हम लोग चांस नहीं छोड़ सकते कि अच्छा नहीं आएगा ना. बट यस, अगर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली. लेट्स मूव ऑन. हु वर द फर्स्ट विनर्स? जो 69 में किसको मिला था सबसे पहले? अगर पता है तो अच्छी बात है, इफ यू नो इट. बट जो इंडियन विनर्स है ना वो याद होना चाहिए. वी विल रिवाइज दैट. तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करा लेंगे. इंडियन विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, है ना. वेरी गुड कार्तिकेय, आपको याद है. फैंटास्टिक. सो द फर्स्ट विनर विल रैगनर फ्रिश एंड जैन तेनबर्गर, है ना. सो की कंट्रीब्यूशन क्या था? ये सब लोवेल थ्योरम, कंजक्चुअल वेरिएशन, फ्रिश वो इकोनोमेट्रिक्स, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. बहुत डिफिकल्ट टर्म. ये था फॉर हैविंग डेवलप्ड एंड अप्लाइड डायनामिक मॉडल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस. सो इफ रिमेंबर यू कैन फाइंड, इट्स गुड. नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट इंडियन विनर्स. ये सब भी पूछ सकते हैं, पास्ट के प्रोमिनेंट इंडियन विनर्स. अच्छा, आज के अखबार में दिया हुआ है इन लोगों का फर्स्ट विनर्स का नाम. ओह ग्रेट. सोशल चॉइस थ्योरी, सोशल जस्टिस, वेल-बीइंग. वेरी गुड. देखो वेल-बीइंग यहां से वेलफेयर इकोनॉमिक्स. फैंटास्टिक. सबसे पहले किसने आंसर किया? कार्तिकेय. वेरी गुड. हर्षवर्धन, फ्लैट एस्पिरेंट, प्रियांशी, चंद्रलेखा, यू ऑल राइट. हाँ, अमर्त्य सेन है. अच्छा, अमर्त्य सेन ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, शायद आपको बताओगे, है ना. एक तो ये बताओगे, हाँ 1998 में उनको मिला. सो दूसरा क्वेश्चन था वाई, है ना. 1998 में मिला फॉर व्हाट? तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो गया, है ना. सोशल चॉइस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस के की बहुत सारी थ्योरी है ना. वेलफेयर का मतलब ही हो गया कि सोशल वेलफेयर की बात हो रही है ना. वेल बीइंग एक्सेट्रा, ये सब टर्म से पहचान सकते हो.
Good. 1998 he got. Let's move on. Amartya Sen also got Bharat Ratan, which is the highest civilian award in India. In which year? The right answer is option B, 1999. मतलब आसान है, याद रखना. देखो 98 में ही मिला, नेक्स्ट ईयर भारत रत्न मिल गया. ठीक है. So B is the right answer to this question. Yes, Karthik, you're right. B is the right answer. देखो 1998 में जनरली अक्टूबर में अनाउंस किया जाता है. ठीक है. और दिया जाता है ना 10 दिसंबर को, बट अनाउंस किया गया अक्टूबर में. एंड 26 जनवरी 1999 को ये अनाउंस किया गया. 26 जनवरी के आसपास अनाउंस किया था भारत रत्न. ठीक है. As you can remember, B is the right answer. ठीक है. Nobel Prize in Economics, भारत रत्न और भी बहुत सारे मेडल मिला. Now the next one. अभी इसका एक इनिशिएटिव, आई थिंक वी डिस्कस्ड इट इन मंथन क्लासेस. पंजाब गवर्नमेंट के का एक इनिशिएटिव इससे रिलेटेड. कैन यू इवन हेल्प मी फाइंड आउट व्हाट इज दैट? 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स along with his wife Esther Duflo and Michael Kramer. ये इनकी वाइफ है ना. He and Esther Duflo are married. So reason क्या? For their experimental approach to alleviating global poverty. अभिजीत बैनर्जी, राइट? हाँ. ये जो है ना, इसके बारे में आप सर्च करना. आई स्टिल रिमेंबर. अभी इसका कुछ न्यूज था. मंथन, जो वीकली मंथन आता है, उसमें इसके बारे में लिखा होता है. Let me check it. Yes, anti-drugs campaigns are related. J-Pal अभिजीत बैनर्जी, या स्कूल कैरिकुलम में J-Pal, because that was a part of current affairs. Let me myself check. हाँ, पंजाब टू लॉन्च एविडेंस बेस्ड एंटी ड्रग स्कूल, J-Pal साउथ एशिया की हेल्प से. राइट. गुड प्रियांशी. हाँ. सो इसको पढ़िएगा. पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, एंटी ड्रग करिकुलम इन स्कूल्स. Is my voice glitching? ठीक है, तो इसको पढ़िएगा. Is my voice clear? कभी कभी हो रहा है. अच्छा, चलो ठीक है, माइक के करीब ले आता हूं. ओके, सो ये 2019 अभिजीत बैनर्जी और his experimental approach to elevating global poverty. ठीक है. सो दीस थ्री वर द विनर्स. ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं. ठीक है. और फॉर एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी अदर पर्सन आल्सो गॉट माइकल क्रेमर. हु इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स 2023? ये इतना पूछेंगे तो चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ. 2023 के क्लॉडिया गोल्डन विनर थी. कभी कभी 2-2 साल पुराने ही पूछ लेते हैं. वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, ये था इनका. समटाइम्स दे आस्क क्वाइट ओल्ड वंस, सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग, है ना. अच्छा, एक चीज और है. नाउ वी आर डिस्कसिंग द नोबेल पीस प्राइज का हिस्ट्री. लास्ट क्लास में हम लोग को मिस हो गया था, सो आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस इट हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, गो टू द लाइव सेक्शन. एक तो ये वाला क्लास आप देख रहे हो, प्लीज वॉच दिस. इसमें जो पीस वाला था, वी हैव डन नोबेल पीस प्राइज 2025. द हिस्ट्री ऑफ नोबेल पीस प्राइज आई मिस्ड, सो आई एम डिस्कसिंग इट हियर. एंड प्लीज गो डाउन. वी हैव डिस्कस्ड क्लासेस ऑन फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ये दोनों, एंड ऑल अबाउट नोबेल प्राइजेस. ओके, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट historical events associated with Nobel Peace Prize. And here we will discuss why Donald Trump was not given this year. Chalo, batao. First you answer these questions. And
एनीवन? थोड़ा सा जो इंटरनेशनल रिलेशन में एक्सपर्ट होंगे वही वो आंसर का शायद कर दे. And why I'm discussing, because this is how they have asked. They go in the past, पुराना उठा के क्वेश्चन पूछते हैं. तो I want your preparation to be absolutely comprehensive, so that even if the difficult most question comes, you can easily solve it. ठीक है. I can इसका नाम है, पढ़िएगा. ठीक है. इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन. ठीक है, 2017 काफी फेमस हुआ था स्विट्जरलैंड. Another initiative is that all the countries should completely abolish nuclear weapon. निहोन हिदानको को 2024 में मिला था, ये 2023 ये 2017 का. ठीक है. ग्लोबल सिविल सोसाइटी ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 2017 में नोबेल पीस प्राइज मिला था. ओके. एंड थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, दैट इज मोर देन इनफ, है ना. तो ये सब उनके मेंबर्स हैं. तो ब्लू वाले के पास, जैसे इंडिया के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास है. आई कैन कंट्रीज जो है, ये रेड वंस है ना, आई कैन देखो इतने सारी कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था. रेड वंस देखो कितनी सारी अच्छी खासी कंट्रीज है. मोर देन 100 होगी आई गेस. ओके, या मोर देन 70-80 तो आराम से होगी. तो ये आई कैन उस टाइम पर 2017 में भी काफी ज्यादा न्यूज में था. दे आई कैन एक्चुअली वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कमिंग अप विद दिस ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. टोटल एलिमिनेशन की बात कर रहा है. टोटल मतलब हर तरह से, जमीन, इवन सिमुलेशन बेस्ड, अंडरग्राउंड, हर तरह का टेस्ट, ऑल न्यूक्लियर टाइप ऑफ टेस्ट शुड बी बैन्ड. So the nuclear weapon countries, they did not sign it. Okay, that is what you should know. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कब मिला था नोबेल पीस प्राइज? प्लीज टेल मी. बताइए. यस, 2020 में. राइट. देखिए, क्लैट एस्पिरेंट, यू आर राइट, सी इज द राइट आंसर. ठीक है. फॉर इट्स इफेक्ट टू कॉम्बैट हंगर, यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन फॉर वॉर. तो क्या कैसे याद रखना है? सब थोड़ा सा याद भी रख सकते हो. देखो 2020 में कोविड आया, लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन आया तो आपसे सोचना कि अच्छा हंगर बढ़ गया होगा, तो हंगर कॉम्बैट करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, समथिंग लाइक दिस. ऐसे कुछ स्टोरी बना के याद कर सकते हो, लाइक दिस. ठीक है. सो फाउंडेड 1961, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हेडक्वार्टर इन रोम, है ना. और जीरो हंगर जो है वो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड वाला है. हु इज द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2023? है ना. सो नरगिस मोहम्मदी थी ईरान की. अभी अहमद अली 2019 के थे, इथोपिया से इनको मिला था. इथोपिया के पीएम है ना. मारिया रेसा कोई मिला था फिलीपींस की, 2021 या 22 से मिला था. एक बार चेक कर लीजिएगा. ठीक है. पीस प्राइज, यस, बी इज द राइट आंसर. वेरी गुड. हाँ, तो देख लेते हैं थोड़ा. हाँ, नरगिस मोहम्मदी ईरान की, ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए. 2022 में इन तीनों को मिला था. एलिस बेलेट्स्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज. देखो, यूक्रेन से, रशिया से, बेलारूस, ये तीनों वॉर में इन्वॉल्व हैं. उसी कंट्री से ये लोग बिलोंग करते हैं. इनको मिला था 2022 में. ठीक है. अभी अहमद अली मैंने बता दिया, है ना. प्राइम नोबेल पीस प्राइज 2019, इथोपिया. सो स्टिल द सिविल वॉर इज हैपनिंग, बट उस टाइम पर थोड़ा सा शायद कुछ ठीक हुआ था. सो दैट इज व्हाई वाज गिवन. तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा और रिसेंट विनर्स में. मारिया रेसा फिलीपींस से, और दिमित्री मुरातोव को मिला था रशिया से. देखो 2021 में. देन 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना. 2019 अभी अहमद अली फ्रॉम इथोपिया. सो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी रिजॉल्व करने के लिए, है ना. So these were the prominent ones. He's even today also the prime minister of Ethiopia. ठीक है. तो आप पढ़ लीजिएगा. So here is India. हाँ, this is Ethiopia, है ना. Capital is Addis Ababa, the diplomatic capital of Africa. And I hope this is the easiest question of the day. I believe that you should be answering me in 20 seconds maximum. Maximum 20 seconds. मैक्सिमम 20 सेकेंड्स. कैलाश सत्यार्थी. हाँ, तो वो जो आसान क्वेश्चन है वहां पर टाइम बचाना है. वहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना है कि चलो ठीक है आसान मिल गया अब तो हम पूरा 1 मिनट लेंगे, है ना. कैलाश सत्यार्थी, राइट. ओके,
Yes, so we have done it, so I believe that you all should be answering, है ना. So children's rights के लिए दोनों को मिला था, है ना. Yes, now very controversial also, and we'll be discussing it here. In which year Obama got Nobel Peace Prize? We will discuss why it became. So when he was given Nobel Peace Prize, many people said that instead of this has become Nobel Political Prize. C is the right answer. 2009. But why it was criticized? Can anyone tell me? This is the exact reason why Donald Trump was not given this year. Yes, C is the right answer. मैं बताता हूँ क्यों criticize किया गया था. Extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between people. So it means he has strengthened international diplomacy, right? अब देखो, Obama became president on 28th January 2009. ठीक है? The last date to file nomination for Nobel Peace Prize was 1st February 2009. तो 1st February 2009 को नॉमिनेशन फाइल हो गया, अक्टूबर में अनाउंस होता है, एंड 10 दिसंबर को अवार्ड इज गिवन. ठीक है. He became president on 20th January 2009. So in 10 days, within 10 days he was nominated. नहीं, had been power not less than 10 months, had been power only for 10 days. 10 दिन से पहले उनको नॉमिनेट कर दिया गया. तो पहले नॉमिनेशन में सारा लिस्ट में नाम आता है, मान लीजिए 50 लोगों का नाम है. So how somebody nominated him? What special thing he did in those 10-11 days? Hardly for 10 to 11 days he was the president of USA when he was nominated for the Nobel Peace Prize. Okay? इसलिए कि लास्ट डेट जो था 2009 का नोबेल पीस प्राइज का नॉमिनेट करने का, अब नाम आ गया, उसमें से अब टाइम लेते हैं वो, फरवरी से लेकर अक्टूबर तक दे टेक द टाइम टू डिसाइड. सो क्वेश्चन वाज हियर. समझ में आया? यू गॉट इट? And the information about the nominees are sealed for 50 years. 50 साल बाद बताया जाता है कि बाकी अदर नॉमिनेशंस कौन कौन लोग थे. You will get to know 50 years later in 2059. Is it clear? Because recently Donald Trump से related चीजें न्यूज में थे. ठीक है. So he was hardly for 10 to 11 days he was the president. Within those 10-11 days he was nominated. And who can nominate? आप नोबेल प्राइज की वेबसाइट से जाना, इसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा है कि कौन कौन नॉमिनेट कर सकते हैं. बट इट हैज टू बी रीजनेबल, राइट? How have you even why you have accepted the nomination was the question, है ना? Second thing, Donald Trump became assumed office on 28th January 2025. ठीक है, this year, and he is saying that he stopped 7 wars. That is why I should be given Nobel Prize. But the thing is, this year the last date to file nomination was 31st January 2025. ये लास्ट डेट था नॉमिनेशन फाइल करने का. तो 20 जनवरी को तो बनी, तो 10 दिन के अंदर कैसे उनको नॉमिनेट कर देगा कोई? यू गॉट इट? सो दैट वाज द लास्ट डेट एंड इट सो दे टेक टाइम. जैसे 31st जनवरी को नॉमिनेशन फाइल हो गया, सारे लोगों का नाम आ गया. नाउ फ्रॉम हियर टू हियर अक्टूबर 2025 दे टेक टाइम टू डिसाइड. व्हाई आफ्टर 50 इयर्स? शायद कंट्रोवर्सी नहीं हो, शायद इसीलिए बाद में बताते हैं 50 साल बाद कि बाकी अदर नॉमिनेशन कौन से. ठीक है, है ना? तो आफ्टर द डेडलाइन द नॉमिनेशंस आर रिव्यूड बाय द प्रेसिडेंट. सो टेक्निकली इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू बिलीव दैट डोनाल्ड ट्रम्प विल गेट द नोबेल प्राइज बिकॉज ही स्टॉप्ड 7 वॉर्स. जैसे उन्होंने कहा कि मैंने 7 वॉर्स, आई हैव स्टॉप्ड इट, सो आई शुड बी गिवन नोबेल पीस प्राइज. इवन इफ दैट इज ट्रू, ही विल बी नॉमिनेटेड नाउ, है ना, बिफोर द नेक्स्ट ईयर जनवरी और फरवरी. एंड इफ there is it's written in his destiny he will get next year. The concept समझ में आया ना? You got the concept that why he was not given this year, है ना? That has to be very crystal clear because I saw people are saying कि उनको नहीं मिला, ट्रम्प को नहीं मिला, etc. So that is the concept. Whether he will be given next year or not will be decided by the Nobel Committee, and I'm not the one who should decide. But ये सब कंट्रोवर्सी हुआ था जब ओबामा को मिला था, तो so that's why we have discussed it. So yesterday he was in Knesset. What is Knesset? Knesset क्या होता है? KNESSET. Yesterday he was there. What is Knesset? Yesterday in the news. Israel's parliament. Very good. He was in Israel's parliament addressing the parliament of Israel. Yes, Karthik, Priyanshi, you all right, है ना? चलो अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कुछ और पास्ट नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड.
जब पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बचा है तो भी कर ही लेते हैं. इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज गॉट नोबेल पीस प्राइज 2007, 6, 11, 8. बताइए. The right answer is 2007. A is the right answer. Yes, कार्तिक मौलिका क्यों सारा चंद्रलेखा जी ऑल राइट है ना. IPCC एंड अल गोर को मिला था यूएस के आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भी रहते कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट पे भी रहते हैं ना. So they both were given. के बारे में बता सकते हो? नहीं, नोबेल गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला. He was nominated 5 times. Are you sure? पता नहीं, because 50 years के बाद बताया था. So the right answer is Mohammad Yunus. I'm sure you must be aware. Head of a country, he got Nobel Peace Prize instead of Nobel Prize in Economics. ये थोड़ा सा यूनिक था, है ना. So because what he did was actually, देखो, Grameen Bank, he actually, what is the credit is given is Grameen Bank, the microfinancing. तो टेक्निकली तो इकोनॉमिक्स में मिलना चाहिए, बट ही गॉट इन नोबेल पीस प्राइज 2006. तो यही पूछेंगे, यहीं पे गेम खेल देंगे कि बिकॉज ही इज स्टिल द एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश, सो ऑफ कोर्स देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन इट. 2006 है ना, कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला कि पीस मिला. तो आप सोचो ये ग्रामीण बैंक में मिला है तो बैंक से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक्स होगा, है ना, बट एक्चुअली इट इज पीस एंड दैट इज व्हाई हाउ यू कैन गेट कंफ्यूज्ड. आंग सान सू की को कब मिला था नोबेल पीस प्राइज? दिस वी हैव डन इट. अगेन इट इज अ रिवीजन. है ना, 1991. डी इज द राइट आंसर. ठीक है. सो 1988, 8 अगस्त 1988 का जो मूवमेंट हुआ था, 8888 अपराइजिंग, 8888 अपराइजिंग से रिलेटेड. एट दैट टाइम शी वाज इन कॉलेज, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट था. ठीक है. सो ये है म्यांमार. आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर. Dalai Lama got Nobel Peace Prize in which year? And he is actually Tibetan Buddhist leader. Now I think he stays in Dharamshala, Himachal. And if I'm not wrong, he has got Indian citizenship also. Let me check. Dalai Lama, Indian citizen. Yes, is not an official Indian citizen but lives in India. Acha, political refugee. Acha, Indian citizen nahi hai technically. That is what Germany told me. So the right answer is B, 1989. But यहाँ पे India लिखे हुए, पता नहीं क्यों. So B is the right answer. एक बार check कर लीजिएगा whether he is an Indian citizen or not. है ना, he stays in Dharamshala. Mother Teresa got Nobel Peace Prize which year? As far as I could remember, 79. है ना, 1979. So C is the right answer. She was born in Skopje. है ना, today it lies in North Macedonia. है ना, but she later on got Indian citizen. ये Indian citizen है, that I know, naturalized citizen. 79 है ना. Anwar Sadat got Nobel Peace Prize. मैं क्यों बता रहा हूँ? There's a question. First Arab country to recognize Israel. What is the answer? ये पूछते हैं कई बार एग्जाम में, क्वेश्चन आता ही. First Arab country to recognize Israel. इजिप्ट. सो एक अकॉर्ड है बहुत फेमस, कैंप डेविड अकॉर्ड. सो कैंप डेविड अकॉर्ड प्लेस है यूएस में. वहां पर ये अग्रीमेंट हुआ था. अनवर सादात वाज द इजिप्शियन प्रेसिडेंट. सो वही 78 में दे वर गिवन, है ना, 78 में कैंप डेविड अकॉर्ड. सो ये इजराइल का पीएम एंड ये इजिप्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना. सो 78 इट इज द अग्रीमेंट. सो ए इज द राइट आंसर एंड फॉर विच he got the award. The concept अभी भी न्यूज में, I'm sure you must be aware. Now we'll be having a Sharm el Sheikh agreement. A meeting will be happening regarding Gaza peace deal, etc. ठीक है. So this is all about today's class. Please subscribe to the channel. Press the like button. कल मैं क्या करूंगा, जो इस साल all the awards that were given this year, we will do a fast revision of that. ठीक है. So do join me, and that would be very, very beneficial. Please subscribe to the channel. Press the like button.